वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are studying chapter 5. Hare Krishna Arti Mataji. We are studying chapter 5 Karma Yoga in the Krishna Consciousness and text 4. ठीक. Sankhya Yoga Prathak Pala Pravadanti Na Pandita Ekam Api Astita Samyag Ubhyor Vindate Phalam. सांख्य योगाओं पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमपि स्थिता सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् सांख्य योगाओं पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमपि स्थितं सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. Yes, anybody would like to read the shloka, they can. सांख्य योगे पृथक बला प्रवदन्ति न पंडिता एकमपि स्थिता सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. Okay, next Mataji. सांख्यो योगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकाम् अपि अस्थिता सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. Okay, next. Anyone else? और कोई श्लोका पढ़ेगा? Yes, Aarti Mataji, would you be able to read the shloka? सांख्य योगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यस्थितः संयुगं सम्यगु योर्वेदन्ते फलम्. Okay, next. Arya, someone new is joined here. Yes, आप पढ़ोगे श्लोका? नहीं माताजी, मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगी. Okay, welcome Arya. Yes, please read the shloka. सबने पढ़ लिया? हाँ हाँ पढ़ लिया माताजी. Arya, you have read the shloka? सांख्य योगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. Thank you. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. Only the ignorant speak of devotional service as being different from the analytical study of material world. Those who are actually learned say that he who applies himself well to one of these paths achieve the results of both. Okay, how many of you have the idea about Sankhya Yoga? I think I have explained many times, मगर किसी को कुछ idea है Sankhya Yoga के बारे में? Anybody remembers? Yes, Asta. माता जी वही जो सांख्य योग है वो कपिल देव जी उन्होंने दिया था माता देवहूति को. वही जो फिलॉसफी है बताई गई थी कि जो मतलब जब हम दो तरह की मैंने पढ़ रही जहाँ तक याद है मुझे कि दो तरह की फिलॉसफी, लेकिन दो कपिल देव है, लेकिन एक फिलॉसफी वो गलत है और ये जो कपिल देव जो भागवतम में मेंशन है वो वाली जो है वो तो सही फिलॉसफी है एंड वो भी अल्टीमेटली भक्ति योगा को ही लीड करती है. Yes. So Sankhya Yoga is basically an analytical study. ठीक है, सांख्य योगा क्या होता है? एनालिटिकल स्टडी होता है. एनालिटिकल स्टडी मीन्स
you do the analysis and then come to the conclusion. Like जैसे हम लोग experiments करते हैं lab में भी, and we do certain experiments. जैसे किसी salt का पता करना हो हमें, if you have studied the chemistry, organic or inorganic, अगर आपने 12th में chemistry पढ़ा है, तो अगर हमें एक particular salt दिया जाता था, तो हमें define करना होता था ये कौन सा salt है. तो उसके लिए we do certain experiments and then we got to know कि what is it. ठीक है, वो तो खैर हमें पता करना होता है, but I'm just telling कि we do certain experiments and then we come to the conclusion. So Sankhya Yoga is also an analytical study. We do certain analysis and then we come to the conclusion. Like for example, I can tell, someone keep an give an example. Like for example, आप जो कोई ध्यान से अगर सोचे, तो हमारी जो बॉडी है वो खत्म होती है ना? It is perishable. This material world is also perishable. Now what is not perishable? The soul inside the body, है ना? और कोई इतना भी एनालिसिस कर सकता है कि ठीक है, मतलब एक जीवित आत्मा में, एक लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में अंतर क्या है? बॉडी आर द सेम, समथिंग इज मिसिंग, सो वन कैन एनालाइज दिस. नहीं, इसके अलावा भी समथिंग इज देयर इन द बॉडी. सो वन कंक्लूडिंग एंड एनालिसिस करके कंक्लूड किया कि नो, देयर मस्ट बी सम इटर्नल बीइंग और सोल इज देयर. ठीक है, अब सोल का पता किया, अगेन वन कैन डू सर्टेन एनालिसिस कि ओके, दिस मटेरियल बॉडी फिनिशेस, देन मटेरियल वर्ल्ड विल फिनिश, बट द सोल डजंट फिनिश. So that means it belong to certain place that never finish. मतलब ये ऐसी किसी जगह से तो belong करती होगी ना, जहाँ जो खत्म नहीं होती है. This is again an analysis. Then one come to know, oh, there must be some superior world also, जहाँ से ये soul belong करती है. Then one can say if the soul belong to someone, कहीं कोई तो इसका source होगा. Something should be the source of this soul. खुद से तो आई नहीं होगी. Then one can be analyzing and then coming to the platform. No, someone more superior to this soul will be there, some supreme power. So this must be the part of that, the soul must be the part of that heart. So like that, this is like Sankhya Yoga is like analytical study. धीरे धीरे हमारा खुद का position पता चलता है. We got to know about the supreme power. Like that we come to ultimately to Bhakti Yoga. ठीक है. Now it says about the devotional service. Only the ignorant speak of devotional service, that is Karma Yoga, as being different from the analytical study of material world. ठीक है, देखा जाए तो कर्म योग क्या है, वो भी क्या है? कर्म योगा means we are performing certain activities and offering the results to Krishna. That is karma yoga. ठीक है. And analytical study means the Sankhya philosophy, what it talks about. It also through the analysis takes to you to भक्ति योगा. कर्म योग भी हमें भक्ति योगा की तरफ लेके जाता है, और सांख्य फिलोसफी वो भी हमें भक्ति योगा की तरफ लेके जाता है. So if we say कि there are difference, तो no, इतना कोई अलग से difference नहीं है. तो both are taking us to the same destiny. ठीक है. So those who are actually learned say that he who applies himself well to one of this path achieve the results of both. तो जो भी हम लोग कोई भी पाथ अपनाएं, चाहे हम सांख्य फिलोसफी से जाएं या कर्म योग से जाएं, so ultimately we'll be ending up in भक्ति योगा. ठीक है. So पर्पट हम लोग देख लेते हैं एक बार. The aim of the analytical study of the material world is to find the soul of existence. ठीक है, मैंने जैसे बोला कि material world की हम analytical study करते हैं. Okay, this body finish, material world finish, सब कुछ खत्म होता है. What doesn't finish? Soul doesn't finish. So like that we come to the higher knowledge. ठीक है, this is analytical study. The soul of the material world is Vishnu. Ultimately we come to know about the origin through this analytical study, or the super soul. Devotional service to the Lord entails service to the super soul. One process is to find the root of the tree and the other is to water the root. अब ये जो दोनों processes है ना, analytical study और one can say the karma yoga, one is like finding the root of the tree, that is analytical study, and the other is to water the root, like offering our fruits to the means offering the fruits. Other is to water the root. वही offering the fruits मतलब water the root. पहला analytical study क्या, we find the origin, we find the source. ठीक है. कर्म योग में we already know the source, we just water the source. ठीक है. Understanding, ये दोनों चीजों में अंतर पता चल रहा है आपको. Analytical study means we try to find the origin. ठीक है, through the analysis and coming to the conclusion. And karma yoga we already know who is the supreme, so we try to offer our results to that supreme person. Means offering the water to the root. हमें पता है root क्या है. और analytical study we try to find the root of the tree. Okay. So the real student of Sankhya philosophy finds the root of the material world, Vishnu, and then in perfect knowledge engages himself in the service of the Lord. Devotional service means service to the supreme person. ठीक है. तो सांख्य योग से we find the root, who is the origin, Vishnu. ठीक है. And then we render the service. और कर्म योग में we already know the root and we just offer the results. ठीक है. So therefore in essence there is no difference between the two because the aim is both. Aim of both is Vishnu. तो दोनों का aim क्या है?
विष्णु ही है, ठीक है. Those who do not know the ultimate end say that the purposes of Sankhya and Karma Yoga are not the same. But one who is learned knows the unifying aim in these different processes. तो जो अज्ञानी व्यक्ति है वो समझ नहीं पाता है कि what is the difference in Sankhya and the Karma Yoga. मतलब they say कि there is a difference, they are not the same, but ultimately both are taking us to the same goal. ठीक है, so there is not that much difference. So is it clear? Karma Yoga and the Sankhya philosophy ये clear है, कोई doubt तो नहीं है इसमें? Is it clear cut explained by Prabhupada in the purport? Yes. Is it clear, na? Okay, we'll move to the next shloka. Okay. Yat sankhya prapihat stanham tadyogerapi gamyate ikam sankyam cha yogam cha ya pashyati sapashyati. Translation. One who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service, and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level, sees things as they are. ठीक है, अब पहले तो एनालिटिकल स्टडी और कर्म योग के बीच में कंपैरिजन हो रहा था. नाउ इट इज डायरेक्ट कंपैरिजन इज कमिंग बिटवीन एनालिटिकल स्टडी एंड डिवोशनल सर्विस. ठीक है, डिवोशनल सर्विस से क्या गोल अटेन होता है हमें? We attain the supreme personality of Godhead, we go to back to Godhead, and this analytical study also take us there only. ये कि इसमें थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है, but ultimately it is also taking us to Goloka. ठीक है, and devotional service is also taking us to Goloka. So there is not much difference, they are on the same level, one can say. In the purport we'll see the real purpose of philosophical research is to find the ultimate goal of life. Since the ultimate goal of life is self-realization, there is no difference between the conclusions reached by the two processes. ठीक है, by Sankhya philosophical research, one comes to the conclusion that a living entity is not a part and parcel of the material world, but of the supreme spirit whole. जैसे मैंने बोला कि obviously हम लोग अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें, जैसे हम लोग ये बॉडी खत्म होगा, मटेरियल वर्ल्ड भी खत्म होगा, सोल तो खत्म नहीं होती, इसका मतलब इट बिलोंग्स टू सर्टेन सम पर्सन, और कि कोई तो ओरिजिन है जो खत्म नहीं होता है. सो दैट मींस इट बिलोंग्स टू द सुप्रीम स्पिरिट, नॉट टू दिस मटेरियल वर्ल्ड. सो दिस इज एनालिटिकल स्टडी. ठीक है, consequently the spirit soul has nothing to do with the material world. His action must be in some relation with the supreme. जैसे मैंने बोला कि अब यहाँ पे तो बंधी हुई है ना आत्मा, तो मतलब ये किसी ऐसी जगह से बिलोंग करती है जो खत्म नहीं होती है, एंड दैट इज द अबोर्ड ऑफ द सुप्रीम स्पिरिट. ठीक है, so it has some relation with the supreme person. तो कुछ ना कुछ relation तो है. So through this we come to know. When he acts in Krishna consciousness, he is actually in his constitutional position. In the first process, Sankhya, one has to become detached from matter, and in devotional yoga process, one has to attach himself to the work of Krishna consciousness. अब दोनों में अंतर क्या है? Sankhya philosophy में we does the analysis and then we come to know about the things. ठीक है, डिवोशनल सर्विस में हमें ऑलरेडी हम लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में ही वर्क करते हैं. ठीक है, अब एनालिटिकल स्टडी के पहले तो हमें नहीं पता होता ना कि व्हाट इज आवर पोजीशन. सो वी डू द एनालिसिस, देन वी कम टू द कंक्लूजन, देन वी गॉट टू नो अबाउट द थिंग्स. ठीक है, बट इन अ डिवोशनल सर्विस वी ऑलरेडी एक्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन. एंड व्हाट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन? बीइंग ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम, एक्ट एज हिज सर्वेंट. ठीक है, सो हम लोग भक्ति में ऑलरेडी उसी पोजीशन पे कार्य करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट प्रोसेस सांख्य मतलब अपने आप को डिटैच करना, धीरे धीरे डिटैच करते हैं मैटर से. हम लोग जानते हैं ना अपने आप को, नहीं मैं मैटर से परे हूँ, आई एम नॉट बिलोंग, आई डिडंट बिलोंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, आई बिलोंग टू सुप्रीम स्पिरिट. सो दैट मींस आई हैव टू लाइक धीरे धीरे डिटैच करते हुए कम्स टू द अपर प्लेटफॉर्म. बट इन डिवोशनल सर्विस व्हाट हैपन? You just engage, you just attach yourself to Krishna, work in Krishna consciousness. You already get detached from all those things. So यहाँ पे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे बोला जाता है ना, to become Krishna conscious, you don't have to leave anything. Just add Krishna in your life, everything will be fine. So this is devotional service. And for Sankhya, we have to gradually, we have to detach ourselves from the matter. Then we come to the position of spirit soul and act in certain way. But in devotional service, you don't have to do anything initially, just get attached to the devotional service. जो कार्य होता है भक्ति में वो करना शुरू कर दो, you automatically act, you're working on the right platform. ठीक है, actually both processes are the same, although superficially one process appears to involve detachment and other process appears to involve attachment. तो एक process detachment सिखा रहा है और दूसरी attachment.
डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर एंड अटैचमेंट टू कृष्णा आर वन एंड द सेम. तो दोनों चीजें हैं तो सेम ही है ना. कृष्णा कॉन्शियसनेस में अटैचमेंट टू कृष्णा मीन्स डिटैचमेंट फ्रॉम माया, एंड डिटैचमेंट फ्रॉम माया मीन्स अटैचमेंट टू कृष्णा, है ना. दोनों चीजों के साथ एक साथ तो नहीं चल सकते ना. माया एंड कृष्णा डोंट गो पैरेलल. they are ill together, you know, they don't go parallel together, they can't go together. So one, if you want to be with Krishna, then you have to detach yourself from the Maya, and if you are attached to Krishna, you're already detached from Maya. So like that way. So one process, Sankhya philosophy, it help us to detach from matter. So the moment we are detached from matter, we are already attached to Krishna. And devotional service, directly attachment to Krishna. So जब कृष्णा से अटैचमेंट है, आसक्ति है, तो भौतिक जगत से तो होती नहीं है ना. So that's how the process is same. So analytical and devotional service, Sankhya and these things are same. Okay. And says one who can see things as they are. तो जो इन चीजों को देख पाता है, समझ पाता है, वो चीजों को as it is देख रहा है. So now first we studied Sankhya and Karma Yoga. So there is no difference between them. One process is to find the root, another is water the root. ठीक है, वो समझ में आया. Now we studied about Sankhya and devotional service. So one detached us from the matter and another attached to Krishna. So both are the same. ठीक है, so there is no difference. So is it clear in जो दो चीजें हमने पढ़ी हैं वो क्लियर है? एंड कोई कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? Yes. Before moving ahead, if any of you having any confusion or any doubts coming to the mind? Yes. Is it clear till now? अभी तक क्लियर आ रहा है? क्लियर हो रहा है अभी तक? Okay. कोई डाउट नहीं है ना अभी तक का? Okay, good. So we'll move to the next shloka. Anytime you get any doubts, please raise your hand and ask. Okay. Sannyasasthu mahabaho dukham aptum ayogata yoga yukto munir brahma nachirena digacchati. Merely renouncing all activities, yet not engaging in the devotional service of the Lord, cannot make one happy. But a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. What says? Merely renouncing all activity, yet not engaging in devotional service of the Lord, cannot make one happy. आप कोई बोले कि हम जो सब कुछ रिनाउंस कर रहे हैं, हम त्याग रहे हैं, सब कुछ त्याग रहे हैं, हम लोग त्याग कर रहे हैं, तो क्या वो आप अगर आप भगवान की सेवा में भी नहीं लग रहे हो तो क्या वो आपको खुश करेगा? नहीं. The only thing that can make one happy is to engage in the devotional service of the Lord and nothing else. Then artificially renouncing the things will not help you. इसको कहते हैं फाल्गु वैराग्य. क्या कहते हैं? फाल्गु वैराग्य means false renunciation. हमने real renunciation के बारे में पढ़ा था. What is real renunciation? Real renunciation is a thing that everything that we see, we try to engage in the service of Krishna. अब जैसे श्रील प्रभुपाद थे, सन्यासी के लिए हवाई जहाज में 7 समुद्र पार करके जाना इज नॉट रिकमेंडेड अकॉर्डिंग टू द शास्त्रस. बट श्रील प्रभुपाद यूज दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड, फॉर द सर्विस ऑफ हिज गुरु महाराज, फॉर द मिशन, फॉर स्प्रेडिंग दिस ग्लोरीज ऑफ द हरि नाम. सो दैट ही यूज ना. अब एक सन्यासी एरोप्लेन में जा रहा है, क्या बात है. पीपल कैन से लाइक दिस. एंड प्रॉपर यूज टू ट्रेवल इन अ रॉयल्स, क्या मुझे नाम भी नहीं बोलना आता, रोल्स रॉयस, या समथिंग इज अ वेरी, बहुत बड़ी गाड़ी होती है, मुझे नाम भी नहीं बोलना आता प्रॉपरली. सो प्रॉपर यूज्ड टू ट्रेवल इन दैट थिंग आल्सो. सो बट दैट ही इज नॉट अटैच्ड टू दैट थिंग. He is using everything in the service of Krishna. That is real renunciation, not the renunciation. Oh, ye mobile, oh, it's Maya, leave it. This laptop is Maya, leave it. Internet is Maya, leave it. What you will do? Are you engaging in devotional service? No. So that is not renunciation. Renunciation means trying to utilizing everything, seeing its utility in the service of Krishna. Like right now, I'm using this laptop. I have this mobile. Okay, I'm having my Wi-Fi broadband in my house. Okay, so if I'm having all these facilities, so I'm using that in a Krishna conscious purpose, for the preaching purpose, for like spreading the teachings of my Guru Maharaj through the courts, and doing some other services like reading the Bhagavatam with you all devotees, and like listening to the lectures. So I'm using this thing in the service of Krishna. So shall I call it, oh, I'm attached, I'm not doing devotional service? No. If I artificially say, oh, this is Maya, no, I'm not going to use this laptop, this mobile, this Wi-Fi, no, it's all Maya. So will it be or not engaging in the service of Krishna?
So will it be real renunciation? No. Okay, that is not the proper thing. ठीक है, अब जैसे दामोदर लीला अभी इसी महीने में हम लोगों ने पढ़ा था, अभी द लास्ट मंथ, अभी जो अभी 1-2 दिन ही हुआ है, it just ended few days back. In दामोदर लीला it says यशोदा माई, ठीक है, so यशोदा माई on the Deepavali day she was wearing the saffron साड़ी, ठीक है, she was wearing that day, उन्होंने क्या साड़ी पहन रखा था, saffron का साड़ी पहना हुआ था. And what she was doing at that day, actually every maid servant was busy in their on because of the Indra Puja. उनके लिए preparation करना था, तो every servant was busy. And that day she was alone. Nobody there to help her. And while Krishna was sleeping in the room, and what Mother Yashoda was doing, she was churning the butter. Okay, she was churning the butter, and through her mouth, her body is engaged in the churning the butter. Her mind is engaged in the Krishna's pastime, and her words are engaged in glorifying the songs of Krishna. कृष्ण के पास टाइम का गुणगान कर रहा है और माइंड जो कृष्ण में मेडिटेट कर रहा है और जो बॉडी है इट इज एंगेज्ड फॉर द चर्निंग ऑफ द बटर दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर कृष्ण. सो हर BMW बॉडी माइंड एंड वर्ड्स आर एंगेज्ड फुली इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. शी इज कॉल्ड रिनाउंस्ड. गृहस्थ में होके भी शी इज रिनाउंस्ड बिकॉज हर बॉडी माइंड एंड वर्ड्स आर एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्ण. That is real renunciation. कोई बोल सकते हैं गृहस्थी है, नहीं गृहस्थ में नहीं रहना है, ओ चर्निंग बटन, ना इट्स माया माया माया, गो लेट मी गो टू द फॉरेस्ट. That is not renunciation. Renunciation means trying to use everything in the service of Krishna. ठीक है, नहीं तो इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की क्या जरूरत है. Prabhupada has built such a big temples, इतने processions, such a big temples where people can come and learn there. Why to publish the books? Is it again in Maya? No. Prabhupada Vrindavan में थे, ठीक है, when Radha Damodar temple he was staying there, so he himself was writing back to Godhead magazine, coming to Delhi, publishing it, editing it and distributing it. So कोई बोल सकता सन्यासी ऐसे काम क्यों कर रहा है, अपने बैठे ही वृंदावन में भजन करें आराम से, अमेरिका जाने की क्या जरूरत है. One can say, but that is a false renunciation. ठीक है, real renunciation is to engage everything in the service of Krishna. Okay. So then one can be happy. As is, if you are not connected with your source, you can never be happy. As I think I given the example, जैसे अब थर्मल पावर प्लांट है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, अब आपके घर के बाहर जो खंबा है उसकी इलेक्ट्रिसिटी अगर मेन पावर हाउस से कनेक्टेड नहीं है तो क्या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी? नहीं आएगी ना. So similarly, the source of bliss enjoyment is Krishna. Okay, and if we are not connected with him, we can never be happy. So that is it. So renunciation means becoming more absorbed in the service of Krishna, not just leaving the service and leaving everything. No. A thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. ठीक है, so just renounce कर देना, एक सैफरन सन्यास का झोला डाल लेना और सेवा ना करना, वो कभी आपको खुश नहीं करेगा. बट एक व्यक्ति जो अपने कार्य भी कर रहा है, अगर उसका माइंड, जैसे यशोदा माई का उदाहरण मैंने दिया, वो तो कहीं जंगल छोड़ के तो नहीं घर छोड़ के तो नहीं जंगल चलेंगे, अपनी सेवा कर रही है ना. So उस तरह से if our body, mind and words are engaged in the service of Krishna, then we can attain the supreme without delay. That is the real essence, not just leaving behind everything. अभी जैसे हम लोग भक्ति में आते हैं ना, जब नए हम लोग शुरू करते हैं कुछ भी करना, तो घर वालों को डाउट रहता है कि हमारे बच्चे इतने यंग एज में भक्ति कैसे कर रहे हैं, अरे ये तो घर बार छोड़ देंगे, अब भक्ति कर रहे हैं. भक्ति करने का मतलब घर बार छोड़ना नहीं होता है. That bhakti makes us more responsible towards our duties. It makes us more responsible towards our parents, towards our brothers, sisters, towards everything. It makes us more responsible. And we see everybody in connection with Krishna. और ज़्यादा loving हो जाते हैं हम लोग. It doesn't make us go away, no. I'm at my home practicing devotional service very nicely. Many devotees are into grihastha, working job, and nicely engaged in the services. So they are also doing. Prabhupada never said that leave everything and go to forest. No. So same thing Krishna is trying to explain to Arjuna also. You don't have to go to you don't have to renounce. Real renunciation means following my instructions. That is renunciation. ना renunciation क्या है? अपनी इंद्रिय तृप्ति का renunciate करना भाई, अपने कर्तव्यों का नहीं. So Krishna said him that don't leave your prime duty. Your duty is to establish the dharma, being a kshatriya. So engage in your duty. Don't just go away. That is not devotional service. And moreover, Krishna himself is giving him the service. कृष्ण की विल थे ना कि जाके लड़ो. अब भगवान स्वयं कह रहे हैं आपको, तो फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है कि क्या सही है क्या गलत है. There is no need. Krishna himself is telling him to fight. But still doubting mentality है ना.
So that's how Krishna is trying to explain it. So we'll read the purport. Okay, purport पढ़ लेते हैं. जैसे वही ना मायावादी कहते हैं सब छोड़ दो, सब माया है, गलत है. ठीक. So there are two classes of sannyasis. दो classes है sannyasis के. There are person in renounced order of life. एक मायावादी सन्यासी होते हैं और एक वैष्णव सन्यासी होते हैं. ठीक है. So मायावादी सन्यासीज are engaged in the study of Sankhya philosophy, Vedanta. वो शास्त्र पढ़ते हैं. Where the Vaishnava sannyasis are engaged in the study of Bhagavatam philosophy, which affords the proper commentary on the Vedanta Sutra. भागवतम क्या है, जैसे हम लोग आज सुबह भी पढ़ रहे थे. So भागवतम is a proper commentary on the Vedanta Sutras. ठीक है. Sankhya's philosophy is like little speculation है, analytic, थोड़ा speculate भी होता है. The Mayavadi sannyasis also study the Vedanta Sutra, but use their commentary called Sharirika Bhashya, written by Shankaracharya. मायावादी भी पढ़ते हैं वेदांत सूत्र, मगर वो कमेंट्री किसने दी है? शंकराचार्य जी ने. शंकराचार्य, who was the Shankaracharya? Shankaracharya, leader of the Mayavadis. Shankaracharya is Lord Shiva himself, who on the order of Krishna came as in Shankaracharya and spread the Mayavad. मायावाद का फिलोसफी ने बताया. तो उनकी कमेंट्री है वेदांत सूत्र में शारीरिक का भाष्य. दैट इज एन इम्पर्सनल कॉन्सेप्ट. ठीक है. वो इम्पर्सनल फिलोसफी उसमें बताई जाती है. सबको पता है ना मायावाद? कोई है तो नहीं यहाँ पे जिसको नहीं पता है मायावाद? आई थिंक बहुत बार अब बोल चुके हैं, तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है मायावादी पे? यस, सबको पता है ना मायावादी कौन होते हैं? एवरीबडी नो? यस, से यस और नो. अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज टेल, सो दैट आई कैन गिव यू लिटिल हिंट अबाउट मायावादी. Okay, if nobody is replying, so I'm taking it that everybody knows who is the Mayavadi. Okay. The students of the Bhagavata school are engaged in the devotional service of the Lord according to the Pancharatrika regulation. Therefore, the Vaishnava sannyasis have multiple engagement in the transcendental service of the Lord. The Vaishnava sannyasis have nothing to do with the material activities, and yet they perform various activity in their devotional service to the Lord. But the Mayavadi sannyasis engaged in the study of Sankhya and Vedanta and speculation cannot relish the transcendental service of the Lord. Because their studies become very tedious, they sometimes become tired of Brahman speculation, and thus they take shelter of the Bhagavatam without proper understanding. Consequently, their study of Srimad Bhagavatam become troublesome. Dry speculation and impersonal interpretation by artificial means are all useless for the Mayavadi sannyasis. The Vaishnava sannyasis who are engaged in devotional service are happy in the discharge of their transcendental duties, and they have the guarantee of ultimate entrance into the kingdom of God. The Mayavadi sannyasis sometimes fall down from the path of self-realization and again enter into the material activities of philanthropic and altruistic nature, which are nothing but material engagements. Therefore, the conclusion is that those who are engaged in Krishna consciousness activities are better situated than the sannyasis engaged in simple speculation about what is Brahman and what is not Brahman, although they too come to Krishna consciousness after many births. अब यहाँ पे दो ट्रांसेंडेंटलिस्ट की बात हो रही है, मायावादी की और वैष्णव सन्यासी. वन सेकेंड, आई जस्ट वांट टू ड्रिंक द वाटर. तो यहाँ पे मायावादी सन्यासी और वैष्णव सन्यासी की बात हो रही है. ठीक है. So Mayavadis, they are also studying the Vedanta, but they are not engaged in any devotional service. ठीक है. So they are just into the speculation, study, that it becomes dry after some time. ठीक है. अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, but they are not engaged practically, किसी चीज में practically engaged नहीं होते हैं. ठीक है. They just discuss Vedanta and sometimes they just get fed up with the mental speculation. ब्रह्म ज्योति पे meditate कर रहे हैं. You are just meditating on something wild, something light. आप कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं है. अब मैं आप ही को बोलूं, आपके घर, आपके सामने एक दीवार है, जैसे मेरे पीछे ये दीवार है. ठीक है. There is some picture is there. तो अगर इसको रिमूव कर दिया जाए, this is simple wall. If I tell you all कि just meditate on this wall, just keep seeing this wall. ठीक है. कुछ नहीं करना, बस इसको देखते रहना, देखते रहना. How long you can see this wall? कितनी देर तक इस वॉल को देख सकते हो? Not so long ना. You after some time you get mad कि बस और कुछ देखते हैं ना, ये इतनी सारी चीजें देखना, ये दीवार दिखा रहे. There are so many things ना. There is nothing reciprocation. अब दीवार से कुछ reciprocation हो रहा है, नहीं हो रहा है. So it just is speculation. So after some time it becomes dry. So then they come into Bhagavatam. और भागवतम भी किसकी रिटर्न है? शंकराचार्य. It is also an impersonal thing. तो उसमें भी वो रसा इतना लीला को आस्वादन नहीं कर पाते हैं.
ठीक है, so it become dry for them. So even if they elevate themselves to the Brahma Jyoti, after that they fall down, क्योंकि वो स्पेस में ही ना फ्लोट करते रहते हैं. They don't get entry into any धाम, any गोलोक में कहीं उनको एंट्री नहीं मिलता है. After some time they fall down from there also. And for devotee sannyasis, they study, they engage in the devotional service, और material activity मायावादी कुछ भी नहीं करते. They don't do any material activities. It's Maya. But devotees, they seem like doing activities also, but उनको कोई भौतिक चीजों से कुछ लेना देना नहीं होता. Whatever they do, their चेतना consciousness is that I'm doing it for Lord. ठीक है, so that is totally Krishna conscious activities are there, and full time they are engaged. Time ही नहीं है. Like for example, today I was like since morning I'm quite very busy going on. अभी मुझे इसके बाद भी I have certain more works to carry on with. Morning, get up, do your japa, then Mangala Arati, then I had the class, then after again I had the class, फिर आप लोगों का class लिया, then I have to study my Bhagavatam, and after that I have to do some other my household work also for few hours, and after that I just took the shower, and then again here the class is going on, and after that also I have to do work on certain quotes, I have to reply certain mails, and again then evening time will come, I have to go to cities and carry, I have to frame some picture of Radharaman, and then again have to come back, then again there will be class, then evening aarti, and then I have to practice my harmonium, and I have to study my Chaitanya Charitamrita. Whole day is busy, where is the time? And one can then see the whole engagement is there, na? Like morning the prasadam is there, now the afternoon offering, abhi offering karna hai aapke baad, abhi after the class will finish, then I have to do the offering to the Lord. So it's like all time engagement is there. Where is the time that your mind will be ideal and you're just thinking, oh, it is like that. Okay. Means there is no time to speculate. So where is that you are getting fed up? And but in Krishna consciousness, there are so many engagements are there. Whole time busy things, you know. So there is no point falling down. And it's like a meditation on the Lord all the time. You are hearing something, reading something, discussing with the devotees. So that is like the reciprocation also you feel as like you are making the bhoga for the Lord and offering to the Lord and doing the artika, singing Hare Krishna Kirtana. So it's an engagements are there. So that way for the Vaishnavas, the senses are already controlled. No, अब इतना engagement का time ही नहीं है कुछ और देखने का करने का. There are so many engagements. There is no time to look for anything else. है ना? But for the Mayavadis it becomes difficult. So the real renunciation is for the Vaishnava sannyasis because they are using everything in the service of the Lord. But for the Mayavadis, it is little difficult. Okay. So yeah, any of you would like to say something or talk about something regarding your own experience or realization? Yes, I would like to hear some of you before moving ahead. Yes. Who would like to say something? कौन बोलेगा? Yes, आरती माता जी, आप बताओ कुछ. On this verse, do you have some understanding? Or Rasta Mataji, you like to say something? Or Parth Pratimdat has also joined. Or maybe the Arya Mataji would like to share some understanding. Yes, any of you, please speak up. Before moving ahead, I would like to hear something from all of you. मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता भगवान में. Oh, so bad, Mataji. Yes, Asta Mataji, you are speaking something? यस माता जी, मतलब एक क्वेश्चन भी है और वही बोलना है कि माता जी जो जो मायावादी होते हैं वो तो भागवत पे मतलब भागवत पढ़ते ही नहीं ना वो तो मतलब क्योंकि वो तो क्योंकि पता है यदि वो भागवत पढ़ेंगे तो उनकी सारी फिलॉसफी नाश हो जाएगी कि भगवान का फॉर्म ही नहीं होता, ये नहीं They होता, study भागवतम माता है जी, ना. but वो कमेंट्री शंकराचार्य का है, वो डिवोटी कमेंट्री नहीं है ना. That is impersonal concept. हाँ हाँ, और वो भी गड़बड़ है फिलॉसफी में उनके. तो फिर और फिर रही बोल रहे थे माता जी की जो चीज मतलब ऐसे ही एक रियलाइजेशन बोलूंगा कि जैसे मायावती था वो फॉर्मलेस आप बोलते ना दीवार पे मेडिटेट करना, और कैसे पॉसिबल ही नहीं होता ना. दीवार वगैरह ऐसे किसी चीज पे जिसका फॉर्म ही नहीं उसमें मेडिटेट क्या कैसे कर सकते हैं, है ना. तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस जैसे था ना कि अब जैसे देखो डिवोशनल सर्विस में भी है, मतलब आप चलो आप दीवार पे नहीं कर सकते लेकिन यू कैन
look at Shyam Sundara, like आप कितने टाइम तक देख सकते हो श्याम सुंदर को कि like how he is wearing necklace, and how he is wearing uh, how his necklace is and how his dress is. हम लोग मतलब श्याम सुंदर को ऐसे मेडिटेट करेंगे भी ना तो भी मतलब कितना आनंद आता है। और अब देखो जिसका कोई फॉर्म ही नहीं, जिसका कुछ ही नहीं, उसमें मेडिटेट करके क्या मजा भी क्या आएगा। Yes. There is तो no point. वो वही ना, भी एक है खाली ना। दीवार को देखते रहोगे, how long you can see? You will get mad after some time. But you are seeing a person, you can adore his beauty. Yes, yes. Like in the morning, I was reading Brahma Samhita. In that verse is there. Venum kuvantam arvindam dalayataksham brahvatmasam asitam buddhasundarangam Kandharpakoti kamaniya vishesha shobham गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अब उसका मीनिंग क्या था? इट सेज दैट मतलब जिसमें से एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट सेज हैव यू सीन एनीवन हुज आईज आर ब्लूमिंग लाइक लोटस पेटल्स, जिनकी आंखें ऐसे लोटस पेटल जैसे ब्लूम कर रही हैं। So meditative. It's Krishna's, and his figure like having the blue hue, मतलब bluish color का है, ठीक है। येलो धोती पहनते हैं, सिर पे मोर पंख है। So it's so meditative. So just read Brahma Samhita. See, you can having so much meditation on the form of Lord. Like his dhoti is like a yellow pitambar he was wearing, so shining. The garland he was wearing is Vijayanti Mala. It was so amazing. So even the bees are just surround around Krishna, like he's like a nectar for them. And it's like so meditative, But Mayavadi, what to meditate on? आप किस पे meditate करोगे? क्या देखोगे आप? तो नहीं हो पाता. So that's why for the sannyasi Vaishnavas, it is very easy to progress into the path of self-realization. But for the Mayavadis, the fall down is there. After many births, actually, they took up Krishna consciousness, but it takes a lot of time. है ना? तो बेहतर है, we are already into Krishna consciousness, so we should take up this process seriously. Okay? Yes. Anyone else? और किसी को कुछ कहना है? आरती माता जी, इसे भगवान में मन ही नहीं लगता है. You should hear about Krishna and see his beautiful form. अपने आप मन लगेगा. And actually, just chant the holy names attentively. You will get the taste. You will get the ruchi in everything. Okay. Yes. Anyone else? और किसी को कुछ कहना? Okay. If nothing, we'll move ahead. This meeting is going to end, so please kindly join again. Okay. आप लोग दोबारा से ज्वाइन कीजिए. हम स्टार्ट में छोटे बच्चे हैं, ठीक है. Now what happens? They always wanted to seek attention. उनको हमेशा attention चाहिए, so they do certain naughty things and all. So हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे so that they attract our attention. So similarly, we all are also wanted some attraction from other people. ना attention चाहिए होता है हमें भी, कोई हमें देखे, कुछ बोले. Everybody should love us. Nobody should hate us. So we all want these things, isn't it? So here. The secret is given. If you all want to become dear to everyone, now what you can do? You have to walk in devotion. Your mind should be controlled and senses should be controlled. Then you will be like very dear to Krishna, and you are always बेशक आप अपना कार्य भी करते रहो, but you will never entangle because their consciousness is dwelling in Krishna conscious way. ठीक है. कि जैसे मैंने बहुत बार बताया है कि जो भक्तगण है वो भी मतलब भौतिक जगत में जाके काम करते हैं ना, but their thought process is that they are doing it for Krishna, so they are always happy and their mind and senses are controlled, so everybody is like pleased by them. अब किसी का मन कंट्रोल्ड नहीं है, कभी भी गुस्सा आ जाए, कभी भी कुछ भी कह रहे हैं, बोले अरे दिमाग खराब है इसका, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं. Does we like those persons? No. और किसी की इंद्रियां जैसे मतलब सेंसेस कंट्रोल नहीं है, लाइक कभी भी कुछ भी खाना शुरू कर दिया, कभी भी किसी को भी मार दिया, कभी भी कैसे हाइपर हो जाना है, कभी भी उदास हो जाना. Do we like such persons? No. But those who are controlled, those are having self-control, we very much like them. Naturally, the attraction comes towards them, isn't it? And how we can attain this control over mind and senses? By engaging in devotional service.
जब हम लोग एंगेज रहते हैं तो हमारा कभी इधर उधर ध्यान ही नहीं जाता है, कभी इधर उधर मन ही नहीं भटकेगा. So then, like though we are working into like in a material way also, that is not entangling us because the mind is always meditating on Krishna. It says Swayamana Krishna Padara Vindayo. So we are, the mind is always fixed at the lotus feet of Krishna, and the mind and senses becomes automatically controlled. So if you want to become dear to all, so just engage in devotional service. Your mind and senses get controlled, and everybody will be pleased with you. Then he says, one who is on the path of liberation by Krishna consciousness is very dear to every living being, and every living being is dear to him. जो भक्ति में होता है वो किसी से द्वेष नहीं करता है, ठीक है. As Radhanath Maharaj quote was there, one of the quote I remember from Radhanath Maharaj. Maharaj says, if you hate any human being, और आप किसी human being नहीं, किसी भी जीवात्मा से hate करते हो, so somewhere you are hating Krishna also, because everything is Krishna's creation ना. हर चीज तो कृष्णा से बिलोंग करती है. Everybody is part and parcel of Krishna. If you are hating some of the part, हर कोई भगवान कृष्ण का part and parcel है ना. So you are hating if one part of Krishna, part and parcel, so that means you are hating Krishna also. But for the devotees, those who are pure devotees, they don't hate anyone. उनका किसी से द्वेष नहीं होता. So everybody is dear to them, and they are very dear to all. So this is Krishna conscious person. These are the devotees. Nobody hates them. So this is due to his Krishna consciousness. Such a person cannot think of any living being as separate from Krishna. Just as the leaves and branches of a tree are not separate from the tree. अब पेड़ है, उसके पत्ती और शाखाएं अलग है क्या उससे? नहीं, उसी के साथ है ना. तो similarly, when we are into Krishna consciousness, when we understand our position, so there is no way we can see other person separate from Krishna. Because everything is creation of Krishna and everybody is part and parcel of Krishna. Then how one can be separate from Krishna? No way. So everything belongs to Krishna, है ना? तो सब कुछ कृष्णा का part हुआ ना? He knows very well that by pouring the water on the root of the tree, the water will be distributed to all the leaves and the branches, or by supplying food to the stomach, the energy is automatically distributed throughout the body. और जैसे हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो हर एक पत्ते को, शाखा को पानी पहुंच जाता है. जिस प्रकार हमारे पेट में खाना जाता है, अलग से हाथ को तो नहीं खिला रहे हो, अलग से कान को, नाक को, आंख को तो नहीं खिलाते हो, मुंह में डालते हो, पेट में जाता है, वहां से आपकी पूरी बॉडी नरिश होती है ना. सो इट्स नॉट, यू आर नॉट सेपरेटली ईटिंग योर, मतलब अपने हाथ को खिला रहे हो फिर आंख को खिला रहे हो, नहीं ना. सिंपली यू पुट द फूड इन योर बेली एंड योर होल बॉडी इज नरिश्ड, ठीक है. सो बिकॉज वन हु वर्क्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सर्वेंट टू ऑल. जैसे आज सुबह ही भगवद गीता मेरा जो क्लास था, उसमें किसी ने प्रश्न पूछा कि इफ वी कैरी सम ग्रजेस विद समवन, हाउ टू डील विद दैट थिंग, कि हमारे किसी के प्रति हेट्रेड आती है, ग्रजेस होते हैं. सो गुरु माता जी ने आंसर दिया था, शी सेज कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अ सर्वेंट, आप दास हो ना. सो दैट मींस यू आर सबऑर्डिनेट टू कृष्णा, और बाकी सब कृष्णा के रिश्तेदार हैं. एवरीबॉडी बिलोंग्स टू कृष्णा. So you should, your servant means no grudges to anyone. You just serve your master. आपका वही कार्य है. So if you just engage in the service of your master, so you don't get bothered by anyone, hatred, grudges. These things will not bother you. एक और चीज मुझे याद आई यहाँ से कि like when you love someone, आप जैसे आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है, आप प्रेम करते हो, तो आप उनसे शादी करना चाहते हो. आप उनको बोला आपने कि चलो हम शादी कर लेते हैं, घर वाले भी मान गए हैं, तो लेट अस गेट मैरिड एंड स्टार्ट आवर न्यू लाइफ, ठीक है, नया जर्नी शुरू करते हैं. सो वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं नहीं देखो, शादी करोगी तो मेरी जो माँ है वो बहुत मतलब थोड़े सख्त स्वभाव के हैं, थोड़ा डांट देते हैं, बहुत डांटते हैं कि भाई अप्रिशिएट नहीं करते हैं. पापा है, उनको बीमारी है, ठीक है, बीमारी लगे तो उनको देखभाल करना पड़ेगा. बहन है तो वो थोड़ा ऐसे ये सपोर्ट नहीं करेगी. तो भाई है, पता नहीं कुछ कह ना दे. तो फैमिली शायद तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है. सो बेटर मे बी यू कैन डिच मी एंड कैन मूव अहेड. बट इफ यू ट्रूली लव दैट पर्सन, व्हाट यू विल से? यू विल से नहीं नहीं, आई लव यू, आई वांट टू बी विद यू, आई वांट टू स्टार्ट माय लाइफ विद यू. सो नो प्रॉब्लम फॉर यू बिकॉज यू लव ऑल योर फैमिली मेंबर, आई एक्सेप्ट योर होल फैमिली. ठीक है, शादी एक व्यक्ति से नहीं होती ना, पूरा परिवार से ही होता है. सबको संभालना पड़ता है, उस व्यक्ति से रिलेटेड जो भी है सबके साथ रिश्ते बनते हैं ना. So what she will say, that no problem, I will adjust with all of them because I love you, I want to be with you. So जितने भी घर वाले हैं आप, मैं सबके साथ एडजस्टमेंट कर लूंगी, कोई बात नहीं, I will do it.
सो सिमिलरली अब हम जब इस्कॉन में आते हैं, भक्ति में आते हैं, ठीक है, अब कृष्ण है, कृष्ण कहते हैं भाई देखो अब जो मेरे भक्त हैं, कई लोग थोड़े सख्त स्वभाव के हैं, कभी कुछ कह भी सकते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है, शायद कुछ लोग तुम्हें पसंद ना आए, तो क्या करना है फिर? कृष्ण के साथ शादी तो नहीं है, बट वी आर गेटिंग इनटू रिलेशन विद कृष्णा, सो वी हैव टू एक्सेप्ट एवरी लिविंग एंटिटी because everybody belongs to Krishna. So it's like we are getting into the family of Krishna, na? So how we can having the grudges and hatred towards anyone? No, because Krishna loves everyone. Then how we can hate anyone? हम किसी को hate कैसे कर सकते हैं भाई? You are accepting Krishna, na? Accepting Krishna मतलब you are taking shelter of Krishna. You are taking him as your master. Then how you can have that hatred and some grudges towards anyone? Because everything is Krishna's family. So no hatred towards anyone. If you love Krishna, love everyone. You know. So like that way. If you love me, love my dog, as Prabhupada says. So similarly, we are getting into Krishna's family, so we have no right to have any hatred or grudges with anyone. Because if you truly love Krishna, then love everyone. So it automatically happens with the devotees. ठीक है, devotees को automatically they love everyone because they see everybody in relation with Krishna. ठीक है. And because everyone is satisfied by his work, he is pure in consciousness. Because he is pure in consciousness, his mind is completely controlled. And because his mind is controlled, his senses are also controlled. जब भक्ति में लगते हैं, तो when we hear these kathas, when we study Bhagavatam, when we do devotional service, our heart gets purified. When the heart is purified, our consciousness is clean, pure, and then our mind and senses get controlled and purified. And then we are able to fix on Krishna. There is no deviation. Nor is there a chance he will engage in sense gratification or any other things. So he does not like to hear anything except topics relating to Krishna. तो वो जो व्यक्ति होगा भक्त है, वो कुछ और सुनना पसंद नहीं करता. He does not like to eat anything which is not offered to Krishna, and he does not wish to go anywhere if Krishna is not involved. कि जहाँ पे कृष्णा नहीं है वो कहीं जाना पसंद नहीं करते. So therefore his senses are controlled. A man of control senses cannot be offensive to anyone. अब जिसकी इंद्रियां कंट्रोल हैं, क्या वो किसी के प्रति ऑफेंसिव हो सकता है, किसी के प्रति अपराध कर सकता है? कभी भी नहीं. Because he is self-controlled, you know. So one may ask, why then was Arjuna offensive to others in battle? Wasn't he is Krishna conscious? Arjuna was only superficially offensive because, as has already been explained in the second chapter, all the assembled person on the battlefield would continue to live individually, as the soul cannot be slain. So spiritually, no one was killed on the battlefield of Kurukshetra. तो बोल सकते हैं कि अर्जुन भी तो बेफिर थे, उन्होंने भी तो अपराध किए होंगे. क्या वो कृष्ण कॉन्शियस नहीं थे? ही वाज, ठीक है, कृष्ण कॉन्शियस थे, बट दैट इज फॉर सम टाइम. ही वाज शोइंग एक्टिंग इन सच एन वे, हमारे बिहाफ पे एक्ट कर रहे थे अर्जुन. ही वाज शोइंग दैट थिंग ऑन आवर बिहाफ only. Okay, Arjuna, while fighting on the battlefield of Kurukshetra, was not really fighting at all. He was simply carrying out the orders of Krishna in full Krishna consciousness. So Arjuna actually बोलेंगे कोई अपने घर वालों को मार दिया, but he is not doing like at his own in a fighting spirit. He is doing it on the order of Krishna. कोई बोल सकता है ना कि जैसे टिट फॉर टैट, कि जैसे दुर्योधना कौरवों ने पांडवों के साथ किया, तो पांडव भी वैसा ही कर रहे हैं, ऐसे ही उनके साथ भेदभाव करें, उनके साथ मारेंगे, उनको पीटेंगे, ऐसा करेंगे, उनके साथ दुष्व्यवहार करेंगे. तो एक्चुअली ऐसा नहीं है. दिस फाइट वाज नॉट आउट ऑफ रिवेंज. ये फाइट आउट ऑफ रिवेंज नहीं थी. इट इज आउट ऑफ इन अ नॉलेज दिस फाइट वाज देयर टू इस्टेब्लिश द धर्म. नहीं तो संधि करने के लिए तो कृष्ण को भेजा था ना, शांति के लिए. एज अ शांति दूत ही वाज सेंट टू दुर्योधना कि वी डोंट वांट फाइट, 5 गांव दे दो चलेगा, सब कुछ, वी विल बी लाइक हैप्पी. बट दुर्योधना वाज नॉट रेडी. सो कोई कैसे, तो अर्जुना वाज नॉट हियर इन अ फाइट, इन अ रिवेंज एटीट्यूड. ही वाज हियर इन कैरिंग आउट द ऑर्डर्स ऑफ कृष्णा. इसीलिए भगवत गीता पहले सुनाई गई अर्जुना को कि डोंट हैव दिस रिवेंज एटीट्यूड. ठीक है, अगर रिवेंज एटीट्यूड ही देखा जाता तो प्रहलाद महाराज के साथ भी तो कितना बुरा हुआ. तो भी हिरण्यकश्यप, भगवान नरसिम्हा को बोल सकते मार डालो इसको, हिरण्यकश्यप को, बहुत बुरा किया इसने. नहीं, but he asked for the liberation for his father. So devotees never carries any revenging attitude or offensive attitude towards anyone. So that's why the Bhagavad Gita was spoken to Arjuna, so that it get purified and understand his duty. You know, being a Kshatriya, it's my responsibility to establish the dharma. This fight was not out of revenge, but out of like it, because it's the order of Krishna. He carries out the order. It's a devotional service he did. Okay, so it is not something offensive. So such a person is never entangled in the reaction of world. So जो भगवान के आदेश अनुसार कार्य करता है, the person who acts in Krishna consciousness, he is never entangled in the reactions of world. Okay, so is it clear to everyone? So we will be stopping here for today.
because time hone wala hai, so I'll be opening up for question and answers. If anybody have any questions or comments or anything you all people like to say or speak, so one can, or if nothing, then we can end the class also. Yes, any of you having anything to say or any questions or anything that is not understood or clear? Yes. Okay. Asta has no questions. Okay, what about others? Aarti Mataji also has no question. Okay. What about Arya? Do you have anything to speak or say? Is it clear to you, Arya? आपको समझ में आया? हाँ माता जी समझ में आया. Okay. So any doubt and question? Okay. Okay, then we'll be stopping here. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Krishna Arjun Samad ki jai, Granth Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, all the assembled devotees ki jai. Thank you so much. See you all tomorrow for the Bhagavatam class.